Good morning, dear students. My name is Lohit Kumar Das. I am a research scholar in sociology in Utkal University and also currently working as a guest lecturer in sociology in BJP Autonomous College, Bhubaneswar. So, today we are going to discuss about your rural-urban linkage and division. So, your second unit is about the Indian social structure. So, as we have already discussed about the structure, so structure simply means the stable arrangement. It is all about the network kind of things through which every elements are interconnected, interrelated and interdependent with each other. And within a structure, every single elements are need to be interrelated, interconnected and interdependent in order to maintain the structure. So, whenever we are discussing about the social structure, that means the social arrangement, this stable social arrangement through which each and every social elements like individual, institution, associations are integrated with each other and they are interrelated, integrated and interdependent with each other in order to maintain this social structure. So, whenever we are basically discussing about the Indian society or Indian social structure, it rests on three pillars. So, there are three systems or the three substructures that mainly define the characteristic feature of Indian society. One is the village community, second one is the caste system, third one is the joint family system. So, already we have covered the caste system in India and village community and its characteristics. So now we are going to discuss about what are the linkages or how rural society is different than the urban society, because rural society itself is a rural social structure, at the same time urban society itself is a urban social structure. So the nature of these two societies are little different from than each other. So in what way urban and rural society are different, at the same time what similarity we can observe between these two social structures, these two concepts are we are going to discuss about in today's class. So here you can see the picture rural and urban. So rural urban, that means the rural social structure and analyzing the urban social structure. So we will analyze both the social structure and differentiate in what way both are different than each other and in what way we can find out certain kind of similarities or continuity, that is the linkage, how urban and rural society are interlinked or how rural society to urban society there is a continuity from rural to urban society. We will discuss that. Next slide. So coming to the first point, that is the rural urban linkage or how this rural social structure and urban social structure are interlinked with each other, or what are the continuity we can observe from rural to urban society and from urban to rural society. This is a continuity जोटा कि मैं कहूँ गोटे समानता बा गोटे निरवच्छिन्न भाव जो कंटिन्यूअस थाए गोटे रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी भितर बा अर्बन सोसाइटी रूरल सोसाइटी भितर को समानता में ता भितर देखुछु को कंटिन्यूटी हमें ता भितर ऑब्जर्व करबा हमें से जिनसटा को डिस्कशन करबा क्लास रे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट rural urban linkage, the merging of town and country. Here the town and country is all about the rural areas here in this context. So rural urban linkage, the merging of town and country, a term used in recognition of the fact that in general there is rarely either physically or socially a sharp division, a clearly marked boundary between the two, with one part of the population wholly urban, the other wholly rural. So if we critically observe this two nature of the social structure, because it is the social nature, it is the nature of the social relationship that differentiate between two type of social structure or two types of society. Suppose we by taking example of industrial society and the rural society. If we critically analyze it, it is the nature of the social relation, because it is the individual and the individual's interaction process and individual interrelationship pattern in a society that makes a unique characteristic of that society. Because without society, without individual, there is no society. Rather, it is the individuals with a pattern interaction and pattern interrelationship pattern they constitute a society. So it is up to the individual relation, because without individual there is no society, and without society there is no individual recognition. So both are interlinked, and individual and society are complementary and supplementary to each other.
it's all about the human relationship. It's about the nature of human relationship. Human relationship is about the social relationship, because it is the individual, it is the human being. They are the central element of this society. Okay, so whenever they are the central element of the society, so it's about the individual and human relationship, that is the social relationship, the nature of social relationship that define a particular characteristic, that define a particular type of society. So by observing the human relationship or social relationship, we can constitute a particular type of society. So now here in the context of we critically analyze the rural social structure, the nature of rural social life, at the same time the nature of urban social life. So rarely there is a sharp division between these two. ए दीटांको भितरे माने गोटे जदि हमें शार्प कंट्रास्टिंग डिविजन्स हमें देखिबा ताले बहुत रेयरली हमें पाइबा. हमें बहुत सारा सिमिलारिटी दीटा जक कंटेक्स्ट रे पाइबा के सेमिति किछि शार्प डिविजन्स हमें रूरल और अर्बन भितर पे जदियो किछिटा डिविजन्स तांको भितर अछि, बट गोटे शार्प कंट्रास्टिंग डिविजन जोटा कि रूरल रे होतबो अर्बन रे हो नथिबो कि अर्बन रे होछि रूरल रे टोटली से जिंसटा र नाही. से जिंसटा रे एते शार्प डिविजन्स हमें पाइबानी. सेटा कहले कोन ना there is a rarely either physically or socially a sharp division, a clearly marked boundary between the two. देखो रूरल सोसाइटी रे भी लोक माने रहउचंती तांकर गुटे वे ऑफ लाइफ अछि, अर्बन सोसाइटी रे भी गुटे वे ऑफ लाइफ अछि. तो से वे ऑफ लाइफ ता डिफरेंट डिफरेंट हेइ थाइ पारे, किंतु सबसे शार्प गुटे कंट्रास्टिंग डिविजन तांको भितर केबे पाइबानी. किछटा सिमिलरिटीज समाने भी से खाद्य खाउचंती तांकर गुटे पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अछि. रूरल एरिया रे भी तांकर गुटे पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अछि. सो ये गुटे बहुत प्रकार प्रोसेस रे जिंसटा चाली छी. सो दिस इज द प्रोसेस. So this is the process through which they are interconnected. There are certain kind of similarities we can find. So rarely we can find out a sharp divisions between the two social structure like rural social structure and urban social structure. So according to Professor A.R. Desai, social life in the countryside, countryside is about the rural social structure or rural society. So social life in the countryside moves and develops in a rural setting just as a social life in the urban areas moves and develops in an urban setting. Their respective setting considerably determine rural or urban social life. So the life pattern of the individuals that develops in a rural area and the lifestyle of the individuals that develops in urban social life or urban social structure, it defines the rural social life and urban social life. Next slide. Again, there are also structural similarities between the two with regard to the pattern of caste, kinship, rules of marriage, observance of religious practices, migration, educational institutions, employment, opportunities, and administration are the other institutional sources of linkage between village and city. So, again, there are certain structural similarities are there. Structure and functions are interrelated. In order to function, we need a proper structural arrangement. We need a proper structural interconnectedness. Without proper structural interconnectedness, it is impossible to function in a smooth manner. So, whenever we are applying this structure function theory into our society, so society is all about a system of social structure. Because society is something broader than the biological organism or biological structure. Our body भी गोटे biological structure, our body भीतर भी सब part माने interconnect होके रहछन. आउ माने प्रॉपर वे इंटरकनेक्ट होके रहिचंती सो दैट हम बॉडी स्मूथली फंक्शन करूची. दैट इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर, biological structure. But if we just take this society from a broader angle, this society, the entire society itself is a social structure, and within that structure, within that society, every element, our institutions like caste system, marriage system, family, school, education, market, all those institutions are interconnected properly. हमें सकाळु उठिला पखरु राति सोइबा भितरे जत्ते कि प्रकार काम करूछु सब गुटे गुटे institution. At the same time, we need institutional means to establish relationship. आमे सोसाइटी रे प्रत्येकटा रिलेशनशिप को, प्रत्येकटा इंटरैक्शन पैटर्न को, बिकॉज़ सोसाइटी केबे केते बेले पॉसिबल हबो जते बेले इंडिविजुअल तांको भितर इंटरकनेक्ट हेबे, तांको भितर कथा बार्ता हबो, इंटरैक्शन हबो, गुटे ऑनगोइंग इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस सेते बेले गुटे सोसाइटी फॉर्म हे परिबो. बट से इंटरैक्शन से ह्यूमन रिलेशनशिप से ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न टाको हमर गवर्न करे हमर इंस्टीट्यूशनल मीन. हमें विदाउट हैविंग द इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, नो रिलेशनशिप कैन बी गाइडेड. So in order to establish relationship, we need a institutional pattern.
So whenever we are observing the rural social structure and urban social structure, there are certain kind of social institutions are there. They are governing the life pattern of the rural society and urban society. So if we take this two society in front of us, then there are still structural similarities are there. From a structural angle, functional angle to hame dekhiba. From a structural angle, from a structural interconnected process angle, we can see that there are structural similarities between the two with regard to the pattern of caste, kinship. देखो अर्बन एरिया रे भी कोट ना कोटी कास्ट सिस्टम अच्छी जदियो एते रूरल एरिया भले ताको रिजिडिटी नाही आमे रिजिडली एते प्रैक्टिस करि करूनु किंतु कोट ना कोटी रूरल एरिया रे भी तमर अर्बन एरिया रे भी लोकन को भितर कास्टिज्म अछि जोटा कि रूरल एरिया रे भी प्रैक्टिस हुए अर्बन एरिया रे भी प्रैक्टिस हुए किनशिप जोटा कि हमें ब्लड बॉन्ड बा मैरिटल बॉन्ड थ्रू आमे जो इंटरकनेक्ट थाउ हम फैमिली मेंबर्स को सहित ना अर्बन एरिया रे कोन लोक माने सब खाली रहउछन ना ताकर के फैमिली नाही सो कास्ट सिस्टम किनशिप सिस्टम रूल्स ऑफ मैरिज अर्बन एरिया रे भी मैरिज होचे हमें सही रिचुअल को प्रैक्टिस करूछु रिलीजियस ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अर्बन एरिया हो रूरल एरिया रे भी हो हमर विभिन्न प्रकार रिलीजियस एक्टिविटीज सब होचे हम रिलीजियस रिचुअल गुडा को सब प्रैक्टिस करूछु देन माइग्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जते बेले तमे आज गारे पाठ पढुछ तमे तो अधिक टिके आगो को क्लास तमर सरीला तमे आउ टिके अधिक हायर स्टडीज पई तमे कोड को आसीबो डिपेंड करबो अर्बन एरिया रे so again there is a continuity there is interdependence between this rural and urban social structure because higher studies पई हमें urban area को आसीबा गोटे प्रॉपर हेल्थ केयर पई सपोज जे देह खराब होला तमर टिके अधिक गोटे भलो ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट दरकार छै so हमें again rural area रो आसु urban area को so again there is a interlinkage and interdependence between these two social structure so there are structural similarities between the two with regard to the pattern of caste kinship rules of marriage observance of religious practices migration educational institutions employment and regarding the educational institution employment opportunity ame rural area jodi dekhiba employment opportunity tike कम because mo yesterday class रे हम डिस्कशन करथिले agriculture is the only way of life यदि हम rural social structure को देखिबा agriculture is the chief way of life of the rural people agriculture is the way of life because rural social structure रे rural लोक माने जो जीवन निर्वाह करछथि तांकर agriculture ता होछि गोटे मुख्य जीविका backbone of Indian villages agriculture is the backbone of Indian village economy जदि हमें देखिबा तार गोटे सबुठ मुख्य स्रोत agriculture टा but employment regarding various type of employment जदि हमें employment opportunity विभिन्न प्रकार employment opportunity जोटा कि rural urban area रे टिके अधिक सेटा कोन ना educational institution employment opportunities administration and other institutional sources that creates the linkage between urban and rural society विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज हो माने मेडिकल फैसिलिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो यदि हम ए पर्सपेक्टिव रो देखिबा ताले अगेन देयर इज ए interlinkage between the urban and interdependency between the rural and urban society rural peoples are depending upon the urban society at the same time it is the urban people they are also depending upon the rural society so again there is the interlinkage then thus village and towns cannot be seen simply as dichotomous entities here dichotomous that means the contrasting element the contrasting there are dichotomous is about two elements those who are contrasting with each other they are the polar opposite with each other but here if we take village and towns rural areas and the urban areas cannot seen simply as a dichotomous entities there are no sharp divisions between these two elements between these two type of social structure there are rarely we can find out sharp divisions between these two they are interlinked and yet distinct for each other they are interlinked both rural society and urban society are interlinked at the same time yet there are certain kind of distinctions are there which differentiate between rural society and urban society no doubt they are interlinked but certain kind of differentiations are also there between this rural and urban next slide Robert Redfield in 1930 has made an important contributions to develop the concept of folk rural urban continuum so ये जो rural urban continuum और linkage जहाँ भी हमें कहीं परिबा so ये जो rural urban linkage टा को तुम्हारा रॉबर्ट रेडफील्ड डेवलप करचंदी से ताको पॉपुलराइज करचंदी so according to Robert Redfield he has constructed a continuum that is the continuity from rural to urban to rural society so he has constructed a continuum from small rural villages to the large cities
More urban means that population is more secular, more individualistic, and with a greater division of labor. If we observe the rural society, the division of labor is very simple because the cheap source of economy, cheap source of employment in the rural areas is the agriculture in itself. But if we take the example of urban society, a lot more employment opportunities are there. So on the basis of that, specialized relationships are there. On the basis of that, a sharp division of labor is there in the urban society. But in rural, simple division of labor. And rural area ଲୋକମାନଙ୍କ relationship ଟା ଗୋଟେ primary relationship ଭିତରେ establish ହେଇଛି. They are interlinked with a primary social relationship. There are significance of the neighborhood. ତାଙ୍କର neighbor ର significance ତାଙ୍କ neighbor importance ଥାଏ ତାଙ୍କ society. But urban society they are very formal in nature. ତାଙ୍କ ଭିତରେ human social relationship ଟା basically ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ formalistic way ରେ ଚାଲେ, ଗୋଟେ formal way ରେ ତାଙ୍କ relationship. They are very individualistic in nature. In rural areas they are very group centered. They are very group centric. That means they are basically concerned about their rural areas, and the sense of we feeling is very much important in the rural area. But in urban areas they are very individualistic in nature. So both self-centric, okay, individualistic. The concept of a rural-urban continuum is interpreted in more easy way. As continuity in the folk, the rural and the urban social organization. So what is the continuity between the folk of the rural and urban area? Folk means it is the people, from a rural people and urban people. What is the continuity between these two? Then the rural and urban social organization. The rapid process of urbanization, establishment of new technologically developed industries in rural areas near to the urban centers have exercised a great impact on rural life. So the rapid process of urbanization. Urbanization is a process that means making the rural areas into the urban areas. देखो आजकल बहुत गुड़े rural areas गुड़ा कौन है लेने आस्ते आस्ते कि urban centric कि urban area रे convert हो गए. आगुरु देखो कितने सारा गांव थे राजस्थान में कि ancient time को पड़ेगा बहुत पूर्व को पड़ेगा देले बहुत rural areas रो depth magnitude बहुत अधिक है. But in contemporary society they are merging into the urban areas. तो मैंने urban areas रे convert हो गए. Urban areas कुछ मैंने पढ़े इसलिए. Now because of the process of urbanization, and at the same time technologically developed industry because of the process of industrialization. Industry गुड़ी का देखिए जब बड़े industry गुड़ा establish हुए तो मैंने केवल town भीतरे हुए जो जगह ताको naturally raw materials मिलुथिबो तो मैंने देखिए से rural setting natural setting रे जाकि से मैंने industry establish कर जो बड़े industry ही जाए कौन हुए ना सब बड़े से जगह रे गोटे इंडस्ट्री है मैंने सेठी बहुत प्रकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुए तो एम्प्लॉयमेंट आसला मैंने ऑटोमेटिकली माइग्रेशन हुए रूरल एरिया रे लोक मैंने काम धंदा पाइबा से से इंडस्ट्री गुडी को पड़े तो से जगह गुडा आस्ते आस्ते कि गोटे अर्बन छोट छोट अर्बन एरिया रे कन्वर्ट हो जिवो आ तापर परे से रूरल एरिया गुडा आस्ते आस्ते कि कन्वर्ट हो जांती अर्बन एरिया. सो rapid process of urbanization, establishment of new technologically developed industries in rural areas near to the urban centers have exercised a great impact on rural life. तो जब बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर गुड़ा हमारा रूरल एरियाज गुड़ा करे हुए से समरे कौन हुए ना तो बड़े लोक माने माइग्रेशन होती तो माने अर्बन पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल को एकोमोडेट करती बा ताको अडॉप्ट करती तो सही प्रोसेस रे कौन हुए ना बहुत सारा रूरल एरियाज गुड़ा तो माने कर लाइफस्टाइल ता चेंज हो जाए तो माने अर्बन सेंट्रिक ही जंती बा गुटा अर्बन एरियाज रो बा अर्बन एरिया रो लाइफस्टाइल को एकोमोडेट करती तो सही प्रोसेस रे कौन हुए ना रूरल लाइफ ऊपर गुटा बहुत डीप इंपैक्ट. So the rapid process of urbanization, industrialization has a deep impact on the rural social life. That's why again there is a continuity from the rural to urban society and urban to rural society. Next slide. The spread of modern industrial trades has decreased considerably. The difference between the two is not visible. So again, modern industrial trades, because nowadays society is growing, industrialization is occurring in rapid way, rapid industrialization process, rapid urbanization process. हमारा urbanization बॉडी बॉडी चली ची, industrialization बॉडी बॉडी चली ची, तो ये जो process रे, ये कौन होची ना गोटे deep impact पकुची rural area रे ची. तो देखिए बो, जब बड़े, जब मैं गोटे example नवा, suppose गोटे industry है ला, तो बड़े कौन होगा ना बहुत सारा लोगों गाँव लोगों में ऐसी किसी industry establish सब काम करे हैं. Because a lot more job opportunities are there in the industrial sector or industrial society.
So whenever people are migrating from the rural areas to the urban areas, at the same time they have started residing near the urban centers or the near industrial centers, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା they automatically try to accumulate all the lifestyle of the urban and industrial sector. Urban और industrial life रो जो lifestyle टाको ସେମାନେ accumulate करते कारण गाँ रो जो भला ताकर चलनी थाए से चलनी टाको ସେମାନେ urban areas रे follow up करी पारंती so ସେମାନେ urban areas रो जो lifestyle टाको accumulate करते तो जते बळे से accumulate करंती से process रे तो सेते बळे कोन होइना समानकर conversion आसी जाय ताकर behavioral pattern ताकर talking style ताकर सब प्रोसेस रे ए वे ऑफ लाइफ रे ताकर गोटे चेंजेस तो सही प्रोसेस रे कोन हुए ना ए जो प्रोसेस कथा हम देखु तो सही प्रोसेस रे ग्रेजुअली कोन हुए ना ताको ऊपर आउ शार्प डिवीजन हमें किछि देखि पारोना जदि हमें अर्बन और रूरल एरियाज को देखिबा ताले ताको भीतर गोटे शार्प डिवीजन बा शार्प कंट्रास्टिंग डिवीजन हमें पाई परबेनी बिकॉज़ दे आर कमिंग टू द अर्बन एरियाज एट द सेम टाइम दे आर एक्युमुलेटिंग ऑल द अर्बन लाइफस्टाइल्स एंड अर्बन लाइफ प्रैक्टिसेस because of the rapid industrialization and urbanization. Then, thus, invisible rural and urban cultural boundaries have made it difficult to draw a line of distinction. So, the invisible rural and cultural boundaries, because it is the culture of the society. It is the culture. Culture is about the way of life because we all are individuals. We are living in this earth. And each and every time we need a society in order for our own sustenance. Without society, individual's life is impossible. But the way we are living our life, it is all about the lifestyle and it is all about the culture of our life. Because culture is the way of our life. The way हमें जो बड़ा भाବରେ dressing हो जो भाବରେ कथा को जो बड़ा भाବରେ material gadgets use कर जो बड़ा ideology, mindset, belief system जो भी हमें जहाँ भी करूँ this is all about our culture. So it is the culture that is the only recognition of a society. By observing a particular culture, we can constitute a particular type of society. Suppose there is by taking an example of Odia society and Northeast society. जब हमें Northeast को देखिबा बा Northeastern region को हमें देखिबा ताले ताकर जो कल्चर ताकर जो लाइफस्टाइल ताकर जो कल्चर हमें से कल्चर टाको देखि कि हमें सोसाइटी भितर डिफरेंशिएशन करि पार जदि हम ओडिया सोसाइटी ओडिया लोक मान को देखिबा ताकर गुटे लाइफस्टाइल अछि तो सही प्रोसेस रे से कल्चरल ट्रेट को हमें ऑब्जर्व करि कि हमें दीटा सोसाइटी भितर गुटे डिवीजन हमें करि परबा बट हियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन द इनविजिबल कल्चरल ट्रेट दैट मींस कल्चरल एस्पेक्ट जदि हमें देखिबा सेमते शार्प डिवीजन किछि हमें पाइबा हमर शहर हो बा urban areas ho or rural areas ho ta bhitar kichi sharp cultural divisions nahi so this invisible rural and urban cultural boundaries have made it difficult to draw a line of distinction so jo invisible cultural traits between the urban and rural areas only because of this it is very much difficult to draw a line of the distinction je ha ek perspective re e dita society pura sharply divided it is impossible because of the invisible cultural traits between the rural and the urban society. Then, hence, rural-urban linkage debate can be discussed as follows. So, linkage or continuum debate, it is a debate. Rural-urban continuum, continuity, similarity, it is a debate kind of thing. So, by following lines, we can observe the debate or the continuum between this rural and urban society. The first one, both the concepts rural and urban are not adequately defined. So, हमें तार definition बा गोटे conceptual definitions को हमें देखिबा both the urban and the rural are not adequately defined. They are popular, too familiar concepts but indistinctively defined. So, माने जदियो rural urban as a concept they are very much popularly defined but too familiar concept. These are the two familiar concepts but indistinctively defined. So, माने को कौन सी basic differentiation तांको भितर नहीं as a concept. Next slide. Both rural community and urban community have been subjected to change for which strict distinctions between village community and urban community is steadily diminishing. So here social change is there because again there are two concepts of society, social static and social dynamic. That means society change, social change is the law of nature. Nothing remains static. Everything change because social dynamism, social change is the law of nature. So at the same time, when change is the ultimate truth of our lifestyle, so both rural society and urban society face changes. So whenever both the societies are facing changes, that means
There are no subdivisions between these two because the rapid process of industrialization, urbanization, westernization, sanskritization process at the same time, development of advancement of modern technology and western education and development of modern education. This is a process of agent, I mean, agent of social change, factors of social change. This process both rural society and urban society को affect कर जितेबाला यही सब फैक्टर्स गुड़ा दीटा सारा सोसाइटी को सिमिलर भाव में अफेक्ट कर सिमिलर आम कहीपर अफेक्ट कर तो एडाप्टेशन जो रूरल सोसाइटी हो अर्बन सोसाइटी हो जो माने कल्चरल चेंजेस जो अडाप्ट कर सिमिलारिटी so social change because both rural community and urban community have been subjected to change because of change is the ultimate truth of our life, change is the law of nature, and only because of this change both the rural society and urban society are changing. So only because of the changing scenario there are again very rarely sharp divisions between these urban and rural areas. Then urban fringe is a place which brings greater linkage between the rural and urban community. In due course, urban fringe gets developed into a town. So again there is a concept urban fringe. What is urban fringe? Now urban fringe is a place through which a urban area and a rural area interconnects with each other. So urban fringe is a place through which a rural area and a urban area, a town or a village both interconnect. गोटे टाउन आउ गोटे गाँ जो जगह मिट होती जो जगह इंटरकनेक्ट हुए जो जगह लिंकेज स्टार्ट जो जगह थाए से जगह गोटे अर्बन फ्रिंज को एज ए कॉन्सेप्ट अर्बन फ्रिंज आम सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्रिंज दिस कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट वेयर अर्बन फ्रिंज रेफर्स टू ए प्लेस वेयर अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया मीट जो जगह दी जन मीट हुए जो दीटा जगह जो माने इंटरलिंक जो जगहटा करे ताको हमें अर्बन फ्रिंज बोली कहो तुम देखि बहुत सारा अर्बन एरिया गुड़ा स्प्रेडेड ही पड़े थिबे तापरे जो रूरल एरियाज गुड़ा थिबो ताको मझिरे देखिबो से जगह गुड़ा अर्बन एरिया को कन्वर्ट ही पड़ो सो अर्बन फ्रिंज इज अ प्लेस व्हिच ब्रिंग्स ग्रेटर लिंकेज बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन कम्युनिटी सो इट इज अ प्लेस इट इज द लिंकेज बिटवीन द अर्बन कम्युनिटी एंड द रूरल कम्युनिटी. So, in due course, urban fringe gets developed into a town. जितेबाला interlinkage टा बढ़ी बढ़ी चले, जितेबाला interlinkage between these two when it develops, जितेबाला interlinkage टा बढ़ी बढ़ी चले कारण urban areas और rural areas रे गोटे interconnected process अछि. तो सही process रे जितेबाला से माने interconnect हो जाती, बस सही process रे जितेबाला से माने interlinked हो जाती गोटे place रे, तो सेटा कौन हुए ना तर बढ़े जिनसटा, से कौन करे आस्ते आस्ते ही कि ता भीतर अर्बन फ्रिंज जो एरिया से कौन आस्ते आस्ते गोटे कन्वर्ट हो गोटे टाउन रे कारण से जगह रूरल रो भी किछटा एस्पेक्ट थाए अर्बन एरिया रो भी किछ एस्पेक्ट थाए बट जो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ए प्रोसेस रे कौन होना द अर्बन फ्रिंज एज ए एरिया इज मर्ज्ड इनटू ए टाउन से डेवलप्ड इनटू कन्वर्टेड इनटू ए टाउन ग्रेजुअली विथ ड्यू प्रोसेस विथ द passage of time it becomes a township area. So urban fringe is a place which brings greater linkage between the rural and urban community. In due course, urban fringe gets developed into a town. So again, the urban fringe to a town and develop, again there is a sharp, rarely visible sharp divisions between the urban and rural areas because the urban fringe once upon a time it was a rural area, it was a part of this rural area. But with the due process of time, ये आस्ते आस्ते कि गोटे अर्बन एरिया रे कन्वर्ट हो तुम आज देख एमती बहुत सारा आस्ते आस्ते हमर गाँव संख्या गुड़ा कमी कमी जाऊँ कहीं आम सब कहूँ ना अरे से गाँटा बहुत डेभलप हो गलानी ए गाँ डेभलप हो गलानी केमिति ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ए प्रोसेस रे कोन होची ना देखिबो अर्बन एरिया जो लोक माने कारण अर्बन एरिया रे पॉपुलेशन ग्रोथ होची पॉपुलेशन ग्रोथ सब बड़े होची किंतु जो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ पई कोन हला ना लोक माने अर्बन एरिया रो आस्ते आस्ते कि रूरल आड़ को मूव करलेनी तो ए जो प्रोसेस रे अर्बन लाइफस्टाइल को से माने रूरल एरिया को निकी पहुंचेबे तो आस्ते आस्ते कि से रूरल एरियाज गुडा बे कन्वर्ट हो जिवो तमरा अर्बन एरिया सो दिस इज द प्लेस where urban areas and rural areas meet. That place is considered as the urban fringe. So urban fringe is a place which brings greater linkage between the rural and the urban community. In due course, urban fringe gets developed into a town. Then fourth point, people living in urban areas maintain regular contact with the native households. Yes, because कहिथिले तुमको जतबेले हम डिस्कस करूथिले
रूरल सोसाइटी कथा बा विलेज कम्युनिटी कथा एवरी इंडिविजुअल्स हम जब समस्त देखा कोटा कोटे आमर गोटे गाँ सहित लिंकेज अच्छी बिकज आम समस्त ओरिजिन गोटे गाँ रही जदिव आम ए टाउन रे रोचु अर्बान एरिया रोचु सिटी मेट्रोपोलिटन सिटीज आम रोचु बट समस्त जदि आमर भी रही आम फोर फादर्स आमर ग्रांड पेरेंट्स आम फोर फादर्स तांकर ओरिजिन कोठना कोठी गोटे गाँ रो सब टाउन रो भी ओरिजिन गोटे गाँ रो ही गोटे विलेज सेटलमेंट रू ही आम डेभलप होकर आज टाउन आड़ को आसु सो पीपुल लिविंग इन रूरल अर्बन एरिया सो जो लोक मैंने भी अर्बन एरिया रे रोचंती तांकर गोटे विलेज कंटाक्ट थाए तांकर गोटे नेटिव प्लेस बोली गोटे थाए जोटा कि रूरल एरिया रू तांकर ओरिजिन सो पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया अर्बन एरियाज मेंटेन रेगुलर कंटाक्ट विथ द नेटिव हाउस होल्ड कारण जो मैंने भी तांकर अर्बन एरिया रे रहिले भी तांकर गाँ सहित गोटे प्रॉपर कंटाक्ट कारण गाँ सहित समस्ते इंटरकनेक्ट था कोठना कोठी तांकर गाँ सहित गोटे प्रॉपर कंटाक्ट बा गोटे कम्युनिकेशन चली थाए तो ये जो कंटाक्ट से लिंक रखती रिलेशंस एट द रूरल प्लेसेस सपोज फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और फॉर एम्प्लॉयमेंट तुम मैंने पाठ पढ़ाई पे आसुच आज समस्ते बाहर को टाउन एरिया को पाठ पढ़ाई को आस तथापि आम गाँ सहित गोटे प्रॉपर लिंकेज अच्छी अच्छा गोटे पिला धर सपोज चाकरी करने आसिक गोटे टाउन रे रहा टाउन से रुहे टाउन रे रहिले भी तार गोटे गाँ सहित प्रॉपर लिंकेज थाए कारण तार रिलेटिव्स माने तार रिलेटिव तार साई पड़िशा समस्त गाँव में रोकता तो तांको सहित तार गोटे कम्युनिकेशन तार गोटे कंटाक्ट थाए तो यही जो प्रोसेस रे पीपुल रिटर्न टू देयर एंसेस्ट्रल विलेज आफ्टर रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट फ्रॉम अर्बन जॉब्स बट जिते चाकरी सरी जाए तो मैंने रिटायरमेंट नियंती चाकरी टू तो मैंने एगेन कौन करती ना मूव करती रूरल एरियाज को घर को मूव करती गाँ को नेटिव को मूव करती ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑब्जर्वेंस जिते कौन सी फेस्टिवल ट्रेडिशन ऑब्जर्वेंस चले गोटे फेस्टिवल ट्रेडिशन सेलिब्रेशन टाइम रे तो मैंने गाँ को जाती किसी दिन टाइम स्पेंड करती छुट्टी दिन जाकि गाँ सहित रुहती सो एगेन से जो रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन करती बिकज दे आर लिविंग इन द अर्बन एरिया एट द सेम टाइम दे हैव एक्युमुलेटेड विथ द अर्बन लाइफस्टाइल भितर अर्बन लाइफस्टाइल थाए किंतु से जो रूरल एरियाज रूरल एरियाज रे रोहुतबा फैमिली मेंबर्स नेटिव साई पड़ोसा रिलेटिव्स मान सहित जो कंटाक्ट जो फ्रिक्वेंसी थाए कंटाक्ट जो कम्युनिकेशन रे गोटे फ्रिक्वेंसी थाए जो कम्युनिकेशन गोटे कंटाक्ट से रखी था रूरल एरियाज रे तो सही जिनटा कौन करे अगेन देयर इज ए लिंक क्रिएटेड बिटवीन दिस अर्बन एंड रूरल एरिया बिकॉज हियर फ्रॉम द अर्बन एरियाज दे आर टेकिंग ऑल द कल्चरल एस्पेक्ट फ्रॉम अर्बन टू द रूरल एरिया एट द सेम टाइम इट इज ए क्लियर linkage between urban and rural areas. Coming to the fifth point, interpersonal network in cities are established on the basis of the commensality of place of origin, reinforcing the concept of village and city. So, interpersonal network in cities are established on the basis of the commensality of place of origin. So, suppose बेले बेले गोटे एग्जांपल आम एग्जांपल नेले बुझी पारिबा सपोज तमे गोटे गाँ रु बिलोंग करूछ आ तमे जाकी गोटे बाहर चाकरी करूछ पिला मैंने सपोज आज आम ओडिसा रु जाइकी आम मुंबई जाइछु हठात आम मुंबई रे गोटे जगह बुलिला बेले जेते आम आम लोक बा गोटे को ओडिसा बा ओडिया लोक को आम देखू आमर गोटे ऑटोमेटिक गोटे इमोशनल बॉन्डिंग तांको प्रति पड़े जे ना से मो प्लेस बा आम ओडिसा रु बिलोंग करती तो ये जो अटैचमेंट कथा मैं कहूँ तो ठीक सेमती तो रूरल एरियाज रू गोटे गाँव लोक मैंने जब सपोज गोटे गाँव गोटे लोक जे गोटे टाउन एरिया रे जॉब करछन्ती चाकरी करके से रही तो सही प्रोसेस रे से गाँव आउ गोटे लोक जाकि धर से गाँव चाकरी कर से अर्बन एरिया चाकरी करके रहिले सो एगेन जिते से गाँव में रोते भितर गोटे प्रॉपर कनेक्शन थिला भितर गोटे इमोशनल अटैचमेंट गोटे स्ट्रांग कम्युनिटी सेंटिमेंट भितर थिला से जो इंटरपर्सनल कनेक्टिविटी बिकॉज मु कहितली व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रूरल सोसाइटी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट द रिलेशनशिप इन रूरल एरियाज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोशल रिलेशनशिप and they have significance of their neighborhood ताकर नेबर माने को सिग्निफिकेंस ताको लाइफ रे अधिक थाए तो जो प्राइमरी इंटरपर्सनल इनफॉर्मल रिलेशनशिप ताको भीतर थाए जतबे सेही लोक माने जे अर्बन एरियाज रे भी रहती तो सेही कम्युनिकेशन सेही इंटरलिंकेज सेही रिलेशनशिप ता भी ताको सेठी कंटिन्यू करे तो सेटा कहू कि इंटरपर्सनल नेटवर्क इन सिटीज आम जदि सिटीज रो अर्बन एरियाज रे जो इंटरपर्सनल कंटैक्ट जदि देखिबा लोक भीतर इंटरपर्सनल नेटवर्क इन सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड on the basis of the commensality of places of origin. The place of origin by rural areas रे जो interconnection थाए by interpersonal contact थाए से जिनसटा तो अर्बन एरियाज रे डेवलप करे केमिति ना सपोज गोटे गाँव लोक मैंने जेकी सेठी रहउछ तो देखिबो तांको भीतर गोटे प्रॉपर कनेक्शन थिबो कि ना हम गाँव लोक सेठी चाकरी करछ ना हम गाँव लोक से कॉलोनी रे रहउछथि तो एई जो प्रोसेस रे गोटे सेही रूरल एरियाज रो कनेक्टिविटी ता रूरल एरियाज रो तांकर इंटरपर्सनल कांटेक्ट को समान कंटिन्यू करके जाईकी अर्बन एरियाज रे भी सेही नेटवर्क ता को एस्टैब्लिश करथि सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस द इंटरपर्सनल
connectivity of the rural areas also it is reflected in the urban areas after moving from rural to urban. So again it creates the concept of village in city. ଯେତେବେଳେ ସେଇ bonding ସେଇ attachment of rural area ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ urban area ରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁ on the basis of their connectivity with their rural native, ତାଙ୍କ rural native ବା rural area ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ important relative ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ relatives ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କର relationship ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ urban areas ରେ ଦେଖୁ କାରଣ ସେମାନେ urban କୁ move କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ communication ବା ଗୋଟେ contact ବା relation ରଖନ୍ତି ତ ସେଇ process ରେ ଆମେ concept of village ଟାକୁ ବି ଆମେ urban areas ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। तब देख भातृभाव भाईचारा ये जो जिन गुड़ा जोटा कि रूराल सोसाइटी को डिफाइन करे देखिए कौट ना कौटी अर्बान सोसाइटी भी आम देखा पाइबा जदियो टिके कम देखा मिले बट कौट ना कौटी देखा मिले अधिक केतबेले गोटे अर्बान एरियाज रे ना गोटे गाँ गोटे डिस्ट्रिक्ट लोक जो एका पाखे रोथे कि गोटे टाउन रे रोथे भितर कनेक्टिविटी आउ टिके अधिक बढ़ी जाए कहीं बिकॉज ऑफ देयर इंटरपर्सनल कनेक्शंस इंटरपर्सनल कांटेक्ट ऑफ द रूरल एरिया। Again, it creates a linkage between these two. Next slide. Moreover, rural and urban areas are mutually dependent. यदि हमें देखिए both rural areas and urban areas are mutually they are dependent with each other. Mutually they are dependent because they are dependent on the basis of suppose for a rural people to get a better job opportunity, to get a employment opportunity, for better higher education, for better medical facilities, they are dependent upon the urban centers. आमे गाँव रे थिला बेले हमको हायर स्टडीज पई हो बा प्रॉपर गोटे मेडिकल फैसिलिटीज पई हो किबा आउ कोनोसी फैसिलिटीज पई हेले बा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पई हेले हमें अर्बन एरियाज ऊपर डिपेंड करू। एट द सेम टाइम अर्बन एरियाज माने तमरो जो विभिन्न प्रकार जदी आसुची सब अर्बन एरिया रे हम जो पनी परिबा जते सब हम पाउछु कोठ आसुची सब रूरल एरियाज रे जो एग्रीकल्चर होची सेइठो आसुची सब। सो अगेन देयर इज ए शार्प इंटरडिपेंडेंसी mutual interdependence is there between the urban and rural area. So जेतेबेले mutual interdependency अछि so again there is a proper linkage between these two. So now we'll discuss about, so already we have covered the urban rural linkage. In this way the linkage or the continuity we can observe between the urban and the rural areas. Now coming to the rural urban differences. So the rural urban differences are there. First point, based on the density of population, development amenities, employment opportunities, education, etc., human settlement is majorly divided into two categories, that is urban and rural. It is the nature of human social relationship. It is the nature of human social relationship that defines, that differentiates between the two type of social structure, that is the urban and rural. It is the type of human social relationship that constitute a particular type of society. It is the type of human nature, human social relationship, behavioral pattern, interaction process that or a culture that constitute a particular type of society. So if we take these two, rural and urban, different cultural traits are there. Urban refers to a human settlement where the rate of urbanization and industrialization is high. On the other hand, in rural settlement, each one there is a rate of urbanization is quite low. So the urban areas को देखिए the rate of industrialization, urbanization is quite high. Urban areas रे तुम्हारा development rapid way रे हुए because of all the social factors like the development opportunities and all. Development opportunity हो तुम्हारा विभिन्न प्रकार से urban areas रे development बहुत faster हुए because of the development of transport and communication. लोगों को भीतर ଗୋଟେ communication ना proper channel थाए, तुम्हारा road construction ये सब infrastructural development पाए, तुम्हारा urban areas गुड़ा बहुत easily जल्दी develop हो जाए. So the pace and the depth and magnitude of the process of urbanization and industrialization is quite high in the urban areas, but in rural areas the process of urbanization and urbanization is quite low. धीरे धीरे हुए urban areas, rural area गुड़ा भी develop होते urban areas को, but the process is quite slow than the urban area. So this is the first differentiation we can observe. Next slide. So here you can see the two type of social structures are there. One is the rural and there is the urban. गोटे बहुत देखिबो बहुत ग्रीन देखा होची गोटे नेचुरल प्लेस हम देखु सेटा गोटे रूरल एरिया को कन्स्टिट्यूट करे आ गोटे देखा गोटे बिल्ड एनवायरनमेंट खाली घर भर्ती होचंती एकम अर्बन एरिया so rural versus urban, what are the basic differences between these two? Next slide. So the fundamental differences between urban and rural areas discuss the following points. A settlement where the population is very high has the features of a built environment.
जदि आमे देखिबा if we compare between the rural and urban areas, the population density is very high in the urban areas and the population density in rural areas is quite low, and the rural urban areas is basically the built environment. Built that means सेठी naturally किछि न थाय देखिबे जते बड़ बड़ होटल जते बड़ बड़ बिल्डिंग सब ताको कंस्टिट्यूट कराइ छै ताको कंस्ट्रक्ट कराइ छै so गोटे built environment, an environment that provides basic facilities for human activity. हमर better education facilities, health facilities, ए सब जिनस हमको मिलि जिवो urban areas में, that is the built environment. But in rural areas it is a geographical region located in the other parts of the cities and towns. ए urban और town को छाडी के जो areas को हम देखिबा geographical area ताको में rural areas बोली को जोटा कि natural setting रे natural places रे. The life in urban areas is fast and complicated, whereas the rural life is simple and relaxed. आमे जदि देखिबा urban areas रे तमे सकाळु सकाळु देखिबा urban areas रे बा towns रे सकाळु सकाळु तमरो जो गाड़ी मोटर शब्द सब स्टार्ट हे जो राति 10 टा 11 टा पर्यंत चली किंतु गोटे rural area को जिवो तमे गोटे नेचुरल साउंड तमे पक्षी पशु माने पक्षी मानकर शब्द गोटे नेचुरल गोटे सुंदर गोटे रिलैक्सेशन गोटे सूदनिंग विंड सेठी फ्लो होतबो गोटे रिलैक्सेशन लागे. आउ आमे जदि देखिबा रूरल सोशल स्ट्रक्चर द लाइफ विद इन अ विलेज इट इज वेरी सिंपल. तमे गां लोकंकर जीवन शैली देखिबा ते कॉम्प्लिकेटेड न था तांको माइंड तांकर सोशल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दे आर वेरी सिंपल, दे आर बिलीव इन द सिंपल लिविंग. बट इन द अर्बन एरियाज जदियो एबे सोसाइटी चेंज हेलानी रूरल सोसाइटी लोक माने भी कॉम्प्लेक्सिटी को मूव कलेनी, बट इफ वी कंपेयर बिटवीन दिस अर्बन एंड रूरल एरियाज द लाइफ ऑफ द अर्बन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स देन द रूरल सोसाइटी. देन the urban settlement includes cities and towns. On the other hand, the rural settlement includes villages and hamlets. Urban area guda cities towns tha kintu village community ba rural areas guda village and hamlets tha. Next slide. There is greater isolation from the nature in urban areas due to the existence of the built environment. Conversely, rural areas are in direct contact with nature as a natural elements influence them. Now, in urban areas there is a built environment. Concrete jungles are there. Concrete jungles that means created jungles. Created jungles is all about concrete jungles is about हमें cement वाली पत्थर रे जो सब विभिन्न प्रकार बड़ा बड़ा सब building सब कर. Concrete jungles are there in the urban areas, but in rural areas they are very much natural. तांकर सेठी देखिबो नईटे बही कि जाइथिबो गछ पत्र थिबे बनलता फूल फुटुथिबो पहाड़ थिबो पाखरे तो ए भला. So rural areas basically settle in the natural setup. गोटे नेचुरल सेटअप रे समान थांती किंतु अर्बन एरियाज रे बिल्ट एनवायरनमेंट कंक्रीट जंगल्स आर देयर. अर्बन पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क. तमे केबे भी गोटे टाउन भीतर देखि परिबन जे टाउन भीतर चाष जमी अछि सेठी चाष कार्य होछि कृषि होछि केबे भी नै. सो द इकोनॉमी ऑफ द विलेज लाइफ इज ऑल अबाउट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, बट इन अर्बन सेक्टर्स a lot many different job opportunities are there. Then population wise urban areas are urban areas densely populated, which based on the urbanization, that is the higher the urbanization the higher is the population. So population density is very much high in the urban areas and the population density in rural areas is quite low. Next slide. Urban areas are developed in a planned and systematic way according to the process of urbanization and industrialization. Development in rural areas is seldom based on the availability of natural vegetation and fauna in the region. So development of urban areas is completely based on the planned way. I mean there gote development haba gote overbridge create haba ba gote konosi building create haba gote planning way re tomar development हुए कोठी urban areas. But development in the rural areas is very rarely gote seldom based on the availability जो natural resources ताको मिले ताको use करके जो rural areas रे development करिबा in comparison with the urban areas, that is very rare we can find. Then when it comes to social mobilization, urban people as highly intensive as they change their occupation or residence frequently in search of better opportunities. Social mobility is about the changing of the social status. Social mobility is excess. Social mobility, there is a chance of social mobility in urban areas is higher than the rural areas. Karanam urban areas रे लोक माने better job employment opportunities, better job opportunities में ସେମାନେ सब देखते हैं. तो सेही प्रोसेस तांकर सेही ओरिएंटेशन टा अधिक होता है. So many social mobility is easily possible in urban areas, but in rural areas there is a lack of social mobility. There is a low chance of social mobility. Then division of labor and specialization is always present in the urban settlement and the time of job allotment. So
in the urban areas, when the distribution of jobs are there, it is completely based on the sharp division of labor. It is based on the specialization. Those who are specialized in a particular field, they will get that particular job. But in rural areas, simple division of labor are there because of the lack of specialization. गाँ लोक मानकर कौन सी गोटे particular जिनसर specialization होता है, तो मैंने सब जिनसर टाको in generally निजे self sufficiently कर दिया. But in urban areas, they are very much self-centric. They are very much specialized in a particular field. So on the basis of their specialization, sharp divisions of labor we can find in the urban areas than the rural areas. So these are the basic differences between urban and the rural society. So we observe both the continuity and continuum or the similarity between the rural and urban areas, and also the differences